अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे जहाँ पर भी हो। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। आज का जो रिपोर्टल प्रोग्राम है और जिसके अंदर हम बात करेंगे वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और वो है द ट्रू जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर. So we are going to carry a reality check today and try to examine from the various perspectives as to the journalists are following the standards of honesty, integrity, ethics, morals, free of corruption, free of nepotism. तो क्या उनकी प्रॉपर रेगुलेशन हो रही है? क्या जो स्टोरीज हमारी माशरे में डिसमिनेट हो रही है या इनको सर्कुलेट किया जा रहा है, इज देयर अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस व्हेन दीज स्टोरीज आर बेसिकली मॉनिटर्ड? और क्या हमारा जो जर्नलिज्म है, इज इट फेयर, इज इट कंप्रहेंसिव, and is it free of any corruption, any influence, any intimidation, any kind of pressure? तो इसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारा जो सोशल मीडिया है एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ द डिजिटल मीडिया और द अदर मीडिया चैनल्स, तो क्या वो फेयरली आर दे डूइंग द जॉब बेस्ड ऑन द मेरिट, बेस्ड ऑन the transparency, based on truth, based on integrity, based on morals, or based on the ethics? Will have a look on it by critically examining from different sources. सबसे पहले हम समझेंगे इन कश्मीरी सिंपल लैंग्वेज कि जर्नलिज्म गो क्या. जर्नलिज्म छ अख आसान ड्यूटी अकिस जर्नलिस्ट सन्स कि टू प्रोवाइड अ फेयर एंड अ कम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी कंप्रोमाइज. यानी अख रिपोर्टिंग सु पैटर्न अख रिपोर्टिंग हूँ सु अख ट्रांसपेरेंट निज़ाम, सु अख ट्रांसपेरेंट फेयर अख द कंप्रहेंसिव अकाउंट ऑफ इवेंट्स कवर अप करने यम विच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यम लूकन हंज बेस्ट इंटरेस्ट मज आसन, यानी बेहबूदी खतर फलाई खतर आसन, तथ मज कह नेपोटिज्म आसन, तथ मज कह करप्शन आसन, तथ मज न कुन किस्म प्रेशर आसन, तथ मज न कह कंप्रोमाइज आसन व्हेन इट कम्स टू इट्स ट्रांसपेरेंसी, इट्स ट्रूथफुलनेस, इट्स इंटेग्रिटी इज कंसर्न. So, सह गई बेस्ट रिपोर्टिंग when you are disseminating or circulating something. It may be a story, it may be a report, it may be any coverage, it may be any event, it may be any scandal, it may be any kind of event that might have happened in our society. तो यमिक इम्पैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसान छ पूरे माशरस पे. तो सो अख ट्रांसपेरेंट अख सिस्टम आसन युस लुकन तान वातुन गछि ताकि अख पॉजिटिव मैसेज गछि लुकन मज और अख पॉजिटिव आउटकम तो पॉजिटिव फीडबैक वाते लूको पे और अमिक युस रिजल्ट छु और अमिक युस अख महसब छु सो गछ बेस्ड ऑन द मेरिट्स पे. गो तथ वन अख ट्रू जर्नलिज्म, तथ वन अख प्योर जर्नलिज्म, तथ वन युस विदाउट करप्शन तो युस विदाउट नेपोटिज्म जर्नलिज्म यात अस वनो. अच्छा, इसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप डिस्कवर करते हैं सच को, व्हाट इज द ट्रूथ. So you're thoroughly trying to investigate the matters, thoroughly trying to do the research, trying to expand the area of your research and go to the original sources. और वहाँ से आपको जो फीडबैक मिलता है एक क्रिटिकल एग्जामिनिंग के बाद, एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस के बाद उनको आप लोगों तक पहुँचाते हैं. चाहे एक स्कैंडल से फॉर एग्जांपल हुआ है इन आवर सोसाइटी, तो इसके बारे में यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. आप प्रॉपरली डिग डाउन करते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू रीच द ओरिजिनल सोर्सेज. जो ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं उसके बाद यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी, राइट अ स्क्रिप्ट एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर ट्राइंग टू सर्कुलेट दिस अमंग द पब्लिक. स्टोरी को आप पब्लिश करते हैं पब्लिक में. सो जो ये गैदरिंग्स होती है, रिकॉर्डिंग्स होती है, वेरीफाइंग होती है, रिपोर्ट्स ऑन द इंफॉर्मेशन एंड द पब्लिक इंपॉर्टेंस की, इसमें सोर्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ टू बी द फैक्ट्स, द फिगर्स. ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द रूमर्स, समथिंग दैट्स जस्ट बेस्ड ऑन द सेइंग्स somebody has said. So it has to be backed by a strong evidence, the concrete evidences. So that should be the standard that the journalists should be following. जर्नलिज्म जो होता है ये एक बहुत ही अहम पिलर होता है चूँकि डेमोक्रेसी का. It's one of the very important crucial pillar of the democracy wherein we are trying to cover up those stories, those issues, those scandals, those cases of nepotism, cases of the corruption and other defectives which are there in the policies, in the programs, in the schemes, obviously. तो गवर्नमेंट के जो भी promises होते हैं, if they turn out to be the fake, they turn out to be hollow slogans. So there is a kind of a process of journalism which ultimately gauges
their output based on what they have actually achieved. तो चूंकि इसलिए ये एक बहुत ही पिलर होता है जिसमें एक किसी भी डिपार्टमेंट की आप परफॉर्मेंस को गेज करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव बेसिकली डिलीवर्ड ऑन द ग्राउंड. और अगर इसी में इंटिमिडेशन या एक 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 प्रेशर का एक नुक्ता हो, so which makes your reporting tilted towards in the favor of that very person, of that very politician, of that very party, of that very department, then the reporting could be a kind of a chronic disease in our society which may have repercussions in a number of ways. So we need to really make it very sure that we need to have a professional, journalists who knows the real journalism, who knows how to go to the sources, who knows how to do critical examination, who knows how to dig down and reach to the original sources, who knows how to write the script, who knows how to communicate properly, who knows how to make a document, to make a story, obviously, a proper standards of the report. So there has to be a proper qualification also that should be defined by the code of conduct, by the law, obviously, in order to do the professional journalism, और जिससे सोसाइटी को एट लार्ज फ़ायदा मिल सकता है. जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा सोशल मीडिया है या मीडिया है, इट्स कंप्राइज अ डाइवर्स लैंडस्केप. हमारे पास प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एंड डिजिटल मीडिया outlets are there in the Jammu and Kashmir which have a strong vertical presence, which are served by a variety of newspapers या television channels है, radio stations हैं, online news platforms हैं, reflecting the culture and the linguistic diversity of the area is concerned. The official languages in which this media that's basically have the presence in the Jammu and Kashmir, जैसे हमारे पास कश्मीरी है, डोगरी है, पंजाबी है, पहाड़ी है, गोजरी है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, बीरवाई and Sarazi. So these are the languages in which we have the strong presence of the media through different platforms. As we say, the print media is there, we have electronic media, we have digital media, obviously. तो इन language में की बड़ी strong presence है. So all we need to understand, whether it's Kashmiri, it's Dogri, it's Punjabi, it's Pahari, it's Gojri, it's Urdu, it's Hindi, English or whatever, Badarwai or Sarazi, तो सबका जो है अपने अपने एरियाज़ की, अपने अपने कल्चर्स की, अपने अपने लैंग्वेजेस की, अपने रीजन्स की जो है उन इश्यूज़ को सामने लेके आ सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ गवर्नेंस, इन फ्रंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है एक कनेक्टिविटी है बिटवीन द गवर्नेंस, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी, बिटवीन द पॉलिटिशियंस and the public. So this is the kind of a link, and a very strong link, wherein all these issues are raised by the journalists in these different languages that we have talked about through the electronic, digital and the print media. और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अपने होश के नाखून लेती है जब सारी इश्यूज को रैक अप किया जाता है. But as we said, those issues should be genuine. They are based on the facts, figures. There has to be proper research. There has to be proper analysis. There has to be proper investigation and proper observations. And the right tools have been followed, basically. And the genuine tools of the journalism that has been followed. Then it becomes a professional and authentic and transparent, where the sources are very strong, very concrete, very evident. So then it obviously is. हमारे जो कुछ प्रिंट मीडिया के जो है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रिंट मीडिया के हमारे पास जो प्रिंट मीडिया हाउस, जैसे हमारे पास डेली एक्सेल सर है, ग्रेटर कश्मीर है, रेजिंग कश्मीर, कश्मीर पेन एंड द कश्मीर मैगजीन. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंट मीडिया हाउसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक DD Kashmir, रेडियो श्रद्धा and Red FM 93.5. So we need to really understand, and really in terms of following those standards of the print media या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या वो रियल जेन्युइन जो पब्लिक इश्यूज़ है उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकाम तक रियलिटी में लेके आ रहा है कि नहीं. एंड इज़ देयर एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म वेयर इन दे आर engaging with the government, with the officers, with the governors, with the politicians या जो भी इदारे हैं उनके साथ, कि जहाँ पर एक इशू रेजअप हुआ था, रैकअप हुआ था, उस इशू का क्या हुआ. Was that cycle basically completed? मेरा मतलब ये है कि अगर एक इशू है, there is something that is there, and if it was taken to the administration, so there has to be a mechanism wherein you engage with them again and you try to get the feedback as to whether that cycle was completed. वो टास्क कंप्लीट किया था, वो जॉब कंप्लीट हुआ था, उस पर प्रॉपर एलोकेशन हुई थी, उस पर काम हुआ था, रिपेयर हुआ था, वट एवर इट इज़, देन इट्स अ प्रोफेशनल जर्नलिज्म, जहाँ एक पाए तकमील तक, एक काम को पाए तकमील तक, just raising the issue before the coming in front of the channels, बहुत सारे हमारे लीडर चैनल्स के सामने आते हैं
और वहाँ से लोग रिंग करते हैं जी सड़क रोड का है, सड़क का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, हॉस्पिटल्स का है, हेल्थ केयर का है, एजुकेशन का है, वी हैव ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज. Okay, we know we have all these issues, we have the kind of chronic issues which are present over there, but did we really engage with the respective administrators, people sitting in the government, those officials, और जो एक्शन पॉइंट्स है उनको एक्शन पॉइंट्स पे काम करवाया गया? तो वो होता है इन काइंड ऑफ रियल जर्नलिज्म, जहाँ पर इनको आप फोर्स करते हैं कि दे शुड इनिशिएट द एक्शन and they should pursue this case, pursue this project obviously, and try to complete it within a stipulated time that is as it is required. So DD Kosher, Radio Shadda, Red FM, all those should also participate and take part and try to sense their responsibility obviously. जो भी उनके ऊपर है तो उसको लोगों की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए. इसके बाद हमारे पास डिजिटल मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं. हमारे पास कश्मीर न्यूज़ सर्विस है, हमारे पास द कश्मीरियत है, द चिनाब टाइम है, द डिस्पैच है, द कश्मीर वाला. दीज आर ऑल द डिजिटल मीडिया आउटलेट्स दैट वी हैव इन Jammu and Kashmir. Obviously they need to also understand that the real responsibility towards the public obviously in terms of raising all those issues which are there in the public, and try to get the real feedback from the respective departments or from the respective bureaucrats or the officers or from the politicians or from the government obviously at large, और देखा जाए कि इन इश्यूज पे क्या एक्शंस ली गई थी which were raised before these respective departments. कुछ नोटेड बुक्स भी लिखी गई थी जैसे लिटरेचर के ऊपर, कल्चर के ऊपर, नंद ऋषि के ऊपर, लाल देद के ऊपर. एंड ड्यूरिंग द डोगरा रोल जो है 1858 में विद्या विलास प्रेस को एक्वायर किया गया था for the first time in the Jammu and Kashmir. Obviously that was the beginning of the print media in the Jammu and Kashmir when it was a printing. Vidya Vilas name in 1855 was acquired to print the official documents. So this is where it basically began. So all I want to basically say is that कि मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर डेमोक्रेसी का, बट इफ इट effectively works and delivers for the public, then it is ultimately qualification is okay. You need to be qualified, you need to be professional, you need to be what you call it. जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी कि एक थिएटर ऑपरेटर होता है, एक मशीन को ऑपरेट करता है जो कि टेस्ट देती है डॉक्टर्स को. अगर उसको उस मशीन की नॉलेज ना हो, उसको प्रॉपर एक मैकेनिज्म पता ना हो, किस तरह इसको चलाना है, किस तरह इसकी रीडिंग को अंडरस्टैंड करना है, और डॉक्टर्स को जो ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं अबाउट द पेशेंट, दे आर जेन्युइन, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द फिगर्स, द डॉक्टर कुड ultimately diagnose an area or a disease which is not a disease basically, which can turn out to be a disaster for the patient. So likewise, agar media hamari fraternity, they will not effectively report and raise the issues of the public before the government, and obviously do not chase them as to why they are not being ultimately completed, why the action points were not taken there for the timely completion of those tasks, then we are in a big trouble, and then fraternity of the media is not delivering to the expectations of the peoples that could fetch the results. See you next time. Assalamu alaikum.